Welcome back, folks. You are watching the eISL Season 2 brought to you by Nordwind Gaming as we head forth for our final fixture of the evening, and very interesting one at that because it's a very crucial matchup, especially for ATK Mohun Bagan as they go up against the mighty Bengaluru FC. And TT at the back of his mind, and East Bengal FC supporter, a club that is already out of contention, now gets to see his arch nemesis in action. But yes, for all the ATK Mohun Bagan fans, they have won the ISL this season, but can they take on the eISL title and make it theirs? Well, the answer is going to be really difficult as they are fighting for their chance to make it to the playoffs, and suddenly are at such a point where they have to go against the mighty Bengaluru FC. And so tell me, TT, what should we expect from this matchup? आई थिंक बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि बेंगलुरु एफसी के पास बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है, क्योंकि एटीके मोहन बगान आखिरी कुछ दिनों में बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके गए हैं. तो मुझे लगता है कि ये गेम बहुत कुछ डिसाइड करेगा इधर वो कोऑप मैच के ऊपर. बट या मैचअप पे देख पा रहे हैं विकी एक तरफ, दूसरी तरफ हम लोगों को सीजे देखने के लिए मिलता हुआ. हालांकि सीजे अभी तक ज़्यादा मैचेस हारे नहीं है, बट जो कोऑप मैच है मुझे लगता है कि कोऑप मैच ही जो है वो डिसाइडर हो सकते हैं इस गेम के लिए, क्योंकि आखिरी मैच पे सागनिक के अगेंस्ट रहेंगे अफनान का फॉर्म अभी एकदम अलग लेवल पे चल रहे हैं. ऑन द अदर हैंड सागनिक के लिए जो सिचुएशंस है वो थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में प्रॉब्लमेटिक एरिया पे गया है. तो उस जगह से मुझे लगता है कि इधर दोनों के ही पास चांस है इस मैच को जीतने का, एंड बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो गेम है वो देखने के लिए मिले. Yeah, and now you got a very interesting point up, TT, over here, because Bengaluru FC are on a losing streak. They've lost back-to-back 2 games recently. It's not even draw. They've been taking those L's, right? So at this point, I think this was a conversation that we even raised yesterday, that yes, ATK Mohun Bagan, this has to be a club that they have to get a victory against, because otherwise then teams will figure out that Bengaluru FC, they are not as impregnable like we thought. They can be beaten, and we will do that. But in LAN, anything could possibly happen. Bengaluru FC, I think, quite successfully have already qualified for the playoffs. But now go up against an in-form ATK Mohun Bagan, who have won their previous showdown. That was against Jamshedpur FC also. But Vicky and Afnan both are in beautiful form. Afnan has been winning games for his club multiple times on multiple occasions, as the kickoff has already happened, and you could see CJ right off the bat. He wants to attack right to left, and with Ronaldinho almost looked threatening up until the point where Vicky put a stop on it. विकी अगर इधर से ड्रॉ पे भी खत्म कर सकते हैं, देन आई थिंक मैं तो कहूँगा कि विकी के लिए वो एक विन होगा, क्योंकि सीजे को ड्रॉ पे रोकना वो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है. सो बात कर ही रहे थे, देखिए सीजे निकल चुके हैं, राइट में एम्बापे भी निकल चुके हैं, एक पास एंड फिनिश. ओह माय गॉड, व्हाट अ सेव. वैन डे सर द सेवियर, एटीके मोहन बगान जरूर ये सेव जरूर वो याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे सिनेरियोस में सेव आई थिंक 99.9% केसेस पे नहीं हो सकता, लेकिन वो 0.01% आज हो गया. I think the only demarcating factor for me was the fact that the pass was given very close to the keeper. As a result, when it already charged in, and the shot was also not green time, but that leave that out of the window. I mean, does not matter if it's green or it's white or whatever color it is. The point is that it was so close. The contact was so close that he barely managed to get his hands on the ball. And for now, CJ, he's got to go on that attack again. But he's been showing that intent. You could see he's been glued to his screen, not even blinking an eye. Shows that CJ is angry tonight. He is going to unleash his wrath upon ATK Mohun Bagan. But at the same time, ATKMB, you cannot really discard them over here. They have been playing some amazing FIFA over the past couple of days. And if they somehow manage to give an upset to us,
then that would be amazing. And even their campaign has been wonderful considering how it was last season, as now CJ will make no mistake, Oh, finds that room with R9, and well, ATKMB getting a little overwhelmed there. They thought that he might go for an extra pass, but that is where the calmness, the composure of CJ really comes into play as Bengaluru FC get an early lead. या एंड देखिए सीजे कुछ ऐसे प्लेयर हैं, पिछला वाला इतना एक इजी चांस था, वो गोल नहीं हुआ, लेकिन इस बार जब उन्होंने एक बार मिस किया वो ये ठान लिए कि नहीं मिस करेंगे और वो लेफ्ट कॉर्नर से गोल दाग दिए, बेहतरीन। बट सेम चीज विकी को भी करना होगा। एटीके मोहन बगान के लिए एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल गेम है ये। अगर इस पे एटलीस्ट एक ड्रॉ भी निकाल देते हैं देन उनके लिए बहुत कुछ ऑन ट्रैक आ जाएगा और शायद वो इधर से 3 पॉइंट्स के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ये गेम ड्रॉ नहीं होता है, हार जाते हैं, जो कि अभी जस्ट 23 सेकेंड, लाइक 23 मिनट्स हुआ है, अभी बहुत टाइम बाकी है इस गेम के अंदर, बट फिर भी इधर बहुत इंपॉर्टेंस है इस गेम की। लियोनेल मेसी टुवर्ड्स रोनाल्डो, रोनाल्डो टू रोनाल्डिनियो एंड शॉट तो लिए और थोड़ा सा जगह जो है वो अगर मिल जाता तो शायद शॉट ऑन टारगेट रहता, लेकिन उधर वैन डाइक बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो पोजीशनिंग है वो मेंटेन करते हुए दिखे एंड लाजवाब था ये पूरा मूव। बट क्या लगता है आपको, क्या विकी इधर से एक गोल निकाल पाएंगे? Very difficult. At least he's trying though. But you know, the biggest problem, the biggest challenge for Vicky is first to somehow calm down CJ, because you know we've seen CJ play a lot of matches, right? But you know this feels like it's a different CJ tonight. It feels like, you know, he's quite pissed, he's quite angry, and he's just lashing out. Look at how aggressive he's been playing, how many chances he has created already in the first 30 minutes of the game. And how long can Vicky, how much can he just hold on? Already he has conceded once. And if CJ scores one more in the first half, then that's the point where you sort of tend to break down. And at this point, Vicky needs to control the midfield, cannot afford to lose balls like that, because then you are kind of enabling CJ for a fast counter. And you know if he gets into such situations, what can he produce? Ruud Gullit somehow keeping them in contention for ATKMB, and now they get to go on their attack. एक अच्छा चांस था बट शायद ऑफसाइड पे इधर फंसे, जिसकी वजह से बॉल अभी के लिए तो जा चुका है बेंगलुरु एफसी के पास। बेंगलुरु एफसी सीजे कंटिन्यूअसली पासेस खिला रहे थे राइट हैंड साइड के ऊपर, बट फाइनली लूशियो बेलिंगम, देखिए यही हो रहा है, लाइक विकी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो मिडफील्ड या फिर अटैकिंग थर्ड तक पहुंचने में ही उनको जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि डिफेंस ही इतना स्ट्रांग है सीजे का एंड वो पहले से समझ ले रहे हैं कि क्या पासेस होगा। बट राइट हैंड साइड से लियोनेल मेसी निकल चुके हैं ऑलरेडी, बट एक सपोर्ट पास की जरूरत है। या फाइनली रोनाल्डो, एम्बापे के लिए कोशिश था बट बीच में बेहतरीन इंटरसेप्शन, जिसकी वजह से फिर से ये अटैक टूटेगा, खतरा टलेगा और सीजे काउंटर पे जाएंगे। You know what, TT? There are 3 clubs that are you know, right now praying to their gods, and they would be Hyderabad FC, Odisha FC, and Kerala Blasters FC. That and what is their prayer? That Bengaluru FC successfully defeat ATK Mohun Bagan. Because if ATK Mohun Bagan somehow or the other, you know, give us an upset, they win this matchup, then that would strengthen their position in the top 6 so much that the other clubs, I think, like we said, right, they were on the mercy. It would all just go down the drain, right? Their hopes of making to the playoffs ends then and there, because then ATKMB will certainly, you know, try to clinch a draw or something out of the other 2 fixtures they have, because out of the 7 games they've played, they've secured 9 points. So they have a potential to score, you know, to end their run with, you know, getting 9 more points, including a win in this one. So could end at 18, which sort of kind of seals that
top 6. And for the other clubs, it's just mere consolation games that they will have to play. So they would be hoping that they see Saransh, in fact CJ at his very best, as in second half also you could see CJ absolutely strong with his press. With Lionel Messi, he takes a shot, it's green time, and that is what a well-timed shot does to you, and goes for the Sue. Yeah. Finally, and with right foot. Wow. 2-0. Bengaluru FC and ATK Mohun Bagan. I think विकी के लिए इधर बहुत टफ होगा इधर से ड्रॉ भी करना, क्योंकि वो अभी तक उस तरीके से अटैक पे भी नहीं जा पाए थे. लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे थे, इधर पास खिला सकते थे बाय द वे, क्योंकि ऑलरेडी थियो हर्नांडेज बहुत ज़्यादा एडवांस कर गए थे. बट इस बार बॉल छीनेंगे, बॉल रहेगा भी. बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे बॉल मिला है, गंवाना नहीं चाहेंगे. थोड़ा ज़्यादा देर तक होल्ड करते हुए दिखे, बट फिर भी बॉल कंट्रोल अभी भी मौजूद है एटीके मोहन बगान के पास. एटीके मोहन बगान रोड लीड फिजिक दिखाते हुए रोनाल्डो फिर से एक बार छीनेंगे. सेकंड बॉल से इधर काफी बेहतरीन तरीके से छीना जा रहा है. अभी भी मौका है. रोनाल्डिनियो बट नो, ऊपर से शॉट ऑन टारगेट नहीं रख पाए. अच्छा मौका था ये, अभी तक पूरे एंटायर गेम पे एक लौता मौका था, बट वो भी गवा दी. Yeah, a little disheartening. You gotta feel bad for Vicky at this point. He's relentlessly trying, and it's just that CJ has been so pressing, so difficult to deal against, and still he's trying to find those attacking plays. Not a lot of passing options there, and he's gonna feel gutted with himself. Manages to steal a corner though. Is he going for a long one? He's got Ruud Gullit there, but Van der Sar stands right next to him. So yeah, goes for a short one with Ronaldinho. Has that 5-star skill moves there, so could just dance his way around and get in, but that does not happen. Ball possession again back to CJ, and CJ unleashed can cause a lot of havoc. So far has been just able to score 2 goals. But if you know CJ, he's one of those players who kind of tends to get very deadly in that second half. So let's see how many more can he produce. या क्या एक और आएगा? हकीमी के साथ ऑलरेडी एडवांस कर गए थे, बट लूशियो, ये लूशियो का कहा रेटिंग है सिर्फ 91, लेकिन जो गेम दिखाते हैं वो वेंडाइक के समान है 96. लाजवाब, एआई ऑन पॉइंट, फिजिक, सब कुछ वेल बैलेंस्ड डिफेंडर. बट आई थिंक इसी वजह से इतना पॉपुलर भी है. बट आई थिंक मोस्ट पॉपुलर कार्ड्स में से यही दो हैं जो अभी ऑन पिच हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, वेंडाइक एंड लूशियो. बाहर मौका बन रहा है, रोनाल्डिनियो बीट करने की कोशिश भी कर रहे हैं. रोनाल्डो मौजूद, बट पीछे से मेसी आएंगे, फिनिश करके जाएंगे, एंड उसी के साथ तीसरा गोल ऑन द नेट्स. और इधर से कोई चांस नहीं है एटीके मोहन बगान के पास, एटलीस्ट ये पहले गेम के अंदर. तो Yeah, I mean, it might just be put to rest, because I don't see a world where Bengaluru FC CJ concedes 3. I mean, for Vicky, a draw against CJ would mean the entire world to him. But he knows it's so difficult, so tough, because CJ not just been so spectacular in his attack, has also been quite impressive in his defense. So at this point, all these goals just comes in, and as an ATKMB fan, you would not want to lose that momentum that you've been building up. And at this point, ATKMB losing this game will open things up again for that 6th spot. So now, what could be their next recourse, right? They will have to win the co-op game, and they will also have to win that final game. Afnan has to show his magic tonight again. And for him to be even trying to contest for that, they will have to win that co-op. A mere draw is not going to do anything. So already a huge,
gigantic task for them as CJ pacing through that right wing. Look at that room and space. All he's got to do is just tap the ball. And there's the fourth one. And I told you, this player gets deadly in the second half. Of course, Vicky made a few changes, but does not amount to anything at all because CJ just keeps on scoring. Yeah. 4-0 already on board. But Vicky वो अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कल जो हम लोगों को देखने के लिए मिला था एटलीस्ट सीजे के साथ खेलने अगर आपको खेलना है तो आपको उसी एग्रेसिव लेवल पे खेलना होगा. आप स्लो नहीं खेल सकते. बट विकी आज बहुत स्लो खेलते हुए दिख रहे हैं जिसके वजह से टाइम मिल रहा है. और सीजे को आप अगर कुछ मिली सेकेंड्स भी एक्स्ट्रा दे दिए तो वो कुछ अलग ही कर देते हैं, और वही चीज़ वो करते हुए दिख रहे हैं तब से. एक और मौका एम्बापे विद एम्बापे, अभी भी बॉल कंट्रोल है. नो वे. ओह दैट वीक फुट. आई थिंक इंडिविजुअल जिस तरीके का ड्रिबलिंग था वो अभी तक के बेस्ट ऑफ द बेस्ट में से कह सकते हैं, लेकिन फिनिश होता तो और मजा आता. बट यू सी बी शॉट एंड फिनिश. कोई तो राय नहीं था इधर कि ये गोल पे जाता. बट वैंडे सार शायद विकी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतने दूर से शॉट ले लेंगे. बट सीजे जब भी देखे कि वैंडे सार आगे आ रहे हैं, रनिंग है, उस टाइम पे उन्होंने शॉट ले लिया, क्योंकि रनिंग टाइम पे आपका गोलकीपर जंप नहीं कर पाता उस तरीके से, और उसका पूरा फायदा मिला. You know, TT over here, I think it's pretty much set in stone right now. Vicky will have to face defeat. And looking for a consolation with R9. No. CJ, we know he's an artist, he's a magician. You know what he produced over there, the kind of skill moves. Of course, missed the shot, but it's fine. But now, there you go, beautiful one, being net in through, but it's already 4 goals target for him, and in those moments, I don't think with the time remaining, he could even score one more. So yeah, I think that's pretty much it. 90 minutes already in, and just waiting for those 2 extra minutes to pass, and then we can call this match to an end. But yes, I think more discussions remain for that quarter game, because Bengaluru FC have been struggling there a little bit. And yesterday we saw last time, they had to lose against Mumbai City FC, one of the strongest teams in the eISL so far. And then we know what Crusher did to Shagni. So co-op is one of those areas where eyes will be on ATKMB if they could replicate something like Mumbai City FC have done. And if they could make that work against Bengaluru FC, then folks, we might have a match on our hands. But as things stand, Bengaluru FC, a 5-1 win over ATK Mohun Bagan, and finally Charanjot can smile. Yeah. And ये था वो पहला गोल जो कि एकदम लेफ्ट पोस्ट के बाजू से निकला, और गोलकीपर कभी भी ऐसा गोल जो है कंसीड करना नहीं चाहते. बट उसके बाद देखिए उधर रुके नहीं, मेसी के साथ के राइट फुट से फिनिश किए, और उसके बाद ये शू, तो कहने की बहुत सारा बेहतरीन था. 5 गोल्स, टोटल अगर गिने जाए दोनों का मिला के 6 गोल्स आए थे इस पूरे गेम से. जिसपे से एक चीज तो पता चल गया कि सीजे को रोकना है तो फुल पेस पे खेलना होगा. अगर आप थोड़ा भी स्लो खेलेंगे, और देखिए सबका अलग अलग स्टाइल होता है, विकी का भी खुद का एक स्टाइल है जिसपे वो खेलते हैं. वो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते, वो बनाते हैं बॉल को. लेकिन चरणजोत के ऑपोजिट पे आप उतना टाइम ही नहीं दे सकते उनको, क्योंकि आप जो बना रहे हैं वो ऑलरेडी समझ जाते हैं कि क्या बना रहे हैं. तो उस जगह पे कहने के लायक हुआ, और 5 गोल्स आते हुए देखने के लिए मिले बेंगलुरु एफसी की तरफ से. And let's be honest, I think 70% of the match time, Vicky had to try and defend CJ. And there were barely moments where he could, try and build up an attack. And there were chances like this. This one, I think, came out of a deflection. And but whatever it is, a goal is a goal.
and I think it was Kylian Mbappe. I think he sort of missed it, not an own goal, but whatever the case is, right now we have to head into the co-op game. But before we do that, I was just checking the next fixtures for ATKMB, and it couldn't be more spicier than this. Next up, they have two opponents who are literally fighting for their spot like cats and dogs there, because they go up against Hyderabad FC and also Kerala Blasters FC. So that will be a battle for the final slot. But yes, let's take a look at the scorecard and see how menacing CJ was against Vicky, absolutely decimating him down to the ground. And now it is time where Afnan comes in to aid Vicky. Afnan has been in a stellar form lately in the eISL. Shagnik has had mixed days, right? Shagnik initially wasn't really getting tested. Bengaluru FC was such a good co-op side until they faced off against Mumbai City FC and FC Goa. Went up against the big guns and lost their chance. But I was having this chat with Dugal also. He said, you know what fixes? Shagnik might be losing a few games right now online. But when this guy comes on LAN, you're going to see a whole different version of Shagnik. And I'm telling you, he's going to dominate and just rip the opposition apart. So let's see. I mean, I'm just hoping his words turn true, because I want to see that Shagnik. We know we've seen the semblances of the killer Shagnik. We have seen those moments, but has been falling short a little bit. But if you have to make a prediction, people, for the next game, what do you think? ATKMB से हो पाएगा या नहीं? ये कहना बहुत टफ है. Like ये जैसे कि हम लोग शुरुआत पे भी कह रहे थे कि सब कुछ इधर डिपेंड करेगा इस कोऑप मैच के ऊपर, क्योंकि सच में हम लोग शायद नहीं जानते हैं कि इस पे क्या होने वाला है. दोनों ही साइड से कोऑप की अगर बात किया जाए, कोऑप पे कहने के निकाले हैं मैचेस, एटीकेएमबी भी मैचेस निकाले हैं कोऑप से, एंड वही जगह पे हम लोगों को देखने के लिए मिला है बेंगलुरु एफसी भी. बट बेंगलुरु एफसी वो कोऑप पे जीते हुए कुछ मैचेस भी खोए हैं, जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिला है. सो कहने की बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी ये मैचअप है, एंड अभी मुझे लगता है कि मेन जो स्पाइस है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि इधर से अगर कोऑप जीत जाते हैं एटीकेएमबी, देन मुझे लगता है कि शायद एटीकेएमबी, बट नहीं चाहेंगे वो चीज़. शाग्निक एंड सीजे यही चाहेंगे कि इधर मौका मिला है खत्म करके चलो, क्योंकि पिछला 2 गेम वो हार गए हैं. तो इधर सब कुछ, जितना भी चीजें उनके दिमाग में है, जितने भी प्लान्स है, स्ट्रेटजीज, फॉर्मेशन, सब कुछ इस गेम पे लगा देंगे. एंड मुझे लगता है कि बेंगलुरु एफसी के लिए ये गेम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एटीके मोहन बगान तो अपना नॉर्मल गेम खेलेंगे, लेकिन बेंगलुरु एफसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इधर ही जीत के खत्म कर दे, नहीं तो शायद बाद में जाके या तो उनको ड्रॉ के साथ या फिर हार के साथ भी संतुष्ट रहना पड़ सकता है. सिर्फ सीजे और शाग्निक ही नहीं, टीटी, इनफैक्ट वारसी, जेनेसिड, लोकमान्यो, शुभम और हमारे प्यारे जो बाकी क्लब्स है, वो भी चाहेंगे कि कुछ ना कुछ होके लेफ्ट राइट हो जाए मामला और हम किसी तरीके से घुस जाएं. बट जो भी है, जैसा भी है, अभी जिस तरीके से हालात है, आई थिंक चलिए ओडिशा एफसी को तो साइड में रख सकते हैं. ओडिशा एफसी का तो कैंपेन खत्म ही हो चुका है, बट केरला ब्लास्टर्स एफसी के पास एक तो मौका है, ठीक है. तो केरला ब्लास्टर्स और हैदराबाद एफसी स्टिल इन द रन एंड मस्ट विन गेम्स. इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. एंड व्हेन यू टॉक्ड अबाउट देयर हैव बीन मोमेंट्स ऑफ some sort of complacency being exercised by Bengaluru FC. I kind of go back to the day in their matchup against Hyderabad FC, where they bottled a 3-goal lead up, but this time look at that run with Lionel Messi. Ooh, that perfect cutback could have been there. Oh my god, this might get really out of hands, but thankfully ATKMB, just calm down. Yes, good decision. Get the back pass coming in, and you can see TT, CJ and Shagnik are posing such an aggressive attack. बट स्टार्टिंग के कुछ मिनट देख के लग नहीं रहा कि कोऑर्डिनेशन सही बन रहा है इधर एटीकेएमबी के लिए. यही चीज के बारे में बात कर रहे हैं. उनके पासेस जो है वो ऑन पॉइंट नहीं जा रहा है, एंड वो पहले से नहीं सोच पा रहे कि देंगे किसको. और देखिए बॉल छीना गया, सेम बॉल छीना जाएगा इस बार एटीकेएमबी की तरफ से भी. राइट हैंड साइड से लियोनेल मेसी टुवर्ड्स रोनाल्डिनो, इधर गोल हो सकता है. बाहर आगे पीछे आ गए थे, इधर लेके आ गए थे. इधर कहने के
रोनाल्डो को, बट जिधर पास था उधर कोई था ही नहीं इसी वजह से। और यही होता है कोऑप पे आपका पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका आप प्रॉपर फायदा उठा सकते हैं। इधर चरणजोत एंड स्टार्निंग शॉट लिए, अभी भी बॉल है गेम पे, फाइनली कॉर्नर। It's exhilarating. First 10 minutes and you could see some amazing end-to-end FIFA, both the clubs wanting to create chances. You can see how much hungry ATKMB also are. They desperately need the win in this one. Somehow need to keep their hopes alive for the final game, and for that they need to win this match no matter what. A fair tackle, a fair challenge by Jude Bellingham, and yeah, no penalty this time. He's not ruled it. Last game for Nate, we saw what happened, but yeah. So coming back, into this discussion now, tell me, TT, what do ATKMB need to do in order to score that first goal and many more after that against such a strong team like Bengaluru FC? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक उनको कॉल आउट्स देना चालू करना होगा। सिर्फ अगर चुपचाप बैठ के खेलेंगे आई डोंट थिंक कि ये हो पाए, क्योंकि डिफेंस में जब भी वो जा रहे हैं अगर एकदम क्लोजली मेजर करेंगे तो वो दोनों जो डिफेंडर्स है वो एक साथ एक जगह पे आ जा रहे हैं, जिसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप दोनों सेम जगह पे सेम प्लेयर के ऊपर तो चार्ज ऐसे नहीं कर सकते एटलीस्ट एक के पीछे एक, जिसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल उनके खुद के प्लेयर जा रहे हैं। तो वो चीज़ तो पहले फिक्स करना है डिफेंस के ऊपर, नहीं तो गोल्स आएंगे, जस्ट कुछ ही मिनट की बाकी है गोल्स आ जाएगा पहला। पर देखिए इस बार जा चुके हैं सीजे एंड सागनिक, दोनों के दोनों अटैक पे जाते हुए राइट हैंड साइड एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है राइट विंग को, बट इस बार फाइनली बॉल कंट्रोल मिलेगा भी। और यही चीज है, जब तक अपने पास बॉल रख पा रहे बेटर, एटलीस्ट वो डिफेंस का जो एरिया है उसको वो फिक्स कर पाएंगे, उतना टाइम उनको मिलेगा, जितना टाइम उनको मिलेगा उतना वो सिनर्जी बैठा पाएंगे गेम के अंदर, क्योंकि अचानक से आके आप सिंगल मैच खेल के आ रहे हो फिर आप कोऑप खेल रहे हो तो वो हो जाता है कभी कभार, टाइम लगता है थोड़ा, और वही टाइम कहने की ज़रूरत था। और इस बार देखते हैं डिफेंस किस तरीके से करेंगे। इस बार बहुत बहुत शानदार पोजीशन, जो डिस्टेंस है वो इधर मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, कोई दोनों मिलके एक साथ चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बट लेट्स सी कब तक फाइनली इधर देखिए डिफेंस करेंगे। और यही चीज़ के बारे में बोल रहा था कि जब जब वो अपना दोनों प्लेयर को सही डिस्टेंस पे रखेंगे तब उनका डिफेंस अच्छा होगा, और वो करना चालू कर चुके हैं। I really feel that ATKMB has to be just, kind of a little coiled, should be playing a little coiled in a coiled manner, right? As a sense that just go for a counter attack and make that one shot and make it right. Because the way Bengaluru FC are playing, so aggressive, sometimes look at that opening that we can see. Their defense line is coming a little high up, and if they can go for a nice driven lob through or a lob through pass and break through the defense and then go on for scoring a goal, then it could be possible. But for that, I think at this point, ATKMB should first calm down on their nerves and try to keep a little bit of that midfield possession. Always just trying to go attacking. I guess you would fall into the traps of Bengaluru FC. Now this is a nice pass. He had some passing room towards Mbappe, but hesitated. And this is where I think they should communicate between each other. You need to be really fast on your controllers, even on your which player you're doing, what action you're performing, because right now Bengaluru FC, they might punish them. Oh, Lionel Messi went in for that step over, but still ball retained with Mbappe. Struggle, fight, and 2 tackles have been made over here, and very important ones, out of which Lionel Messi has been injured. I just hope it's a shoulder or an arm injury. You wouldn't want to see Bengaluru FC making a quick substitution over here. एक चीज तो चेंज हुआ है बैंगलोर एफसी की तरफ से कि वो एडरसन को बाहर नहीं निकाल रही इस बार। एंड वो 2 मैचेस से कल भी देखने के लिए मिला था, या एडरसन ही है जिसकी वजह से वो हार रही है। वैसे या जोक्स अपार्ट, जोक्स जो है वो हम लोग करेंगे क्योंकि टेंशन भरा माहौल है इधर, और वो टेंशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि दोनों ही क्लब्स को इधर चाहिए गोल्स, बट किसी की तरफ से भी आया नहीं है। बट इस बार मौका बनता हुआ बैंगलोर एफसी की तरफ से राइट हैंड साइड से रन निकाल चुके हैं रोनाल्डो टू रोनाल्डिनियो, लेफ्ट हैंड साइड पे एम्बापे एंड विद शॉट राइट टॉप कॉर्नर, फिनिश एंड
हाफ टाइम विसल बजने के जस्ट 1 मिनट पहले एक लीड बना के जा रहे हैं। तो ये जो आखिरी गोल है, ये आखिरी गोल जो बीच में 190 सेकंड्स, लाइक 90 सेकंड्स का जो गैप मिलेगा, इस पे वो सोचेंगे। एटीकेएमबी के दिमाग में यही चलेगा कि गोल कहाँ गए हैं, किस तरीके से करना है, और हमारे पास टाइम भी नहीं है, 45 मिनट्स है। तो ये प्रेशर, हाफ टाइम के पहले गोल करने का ये जो प्रेशर है, ये रहता है, बहुत जोरदार रहता है। पोजीशनिंग के मामले में बहुत आगे एटीकेएमबी, लेकिन शॉट एक भी नहीं ले पाए। And you know, this last goal that they conceded, that one little, I think it had to do with the player switch, to be honest, because whosoever was on the the Van Dijk there, I felt the moment Mbappe was going for a step over, had he made that tackle, it could have just stopped the play there. Yes, it would have been a risky one. Yes, he could have also considered a penalty, but that's the chance you would have to take at this point if you want to beat Bengaluru FC right over there, because now they seem to be in the flow with Ronaldinho right off the bat. They were just pushing in, but thankfully saved. Mbappe coming down and trying to defend, trying to get the ball possession back, and they have succeeded for a moment, but where do they go from here? Trying to utilize that right wing, and I would at some point also see maybe ATKMB trying to go for those finesse shots outside the box. Few Trivella's finesse shots outside the box have been nerfed a little in comparison to last season, because last season every other goal used to be a finesse. Oh, and in a very tight situation, and I thought this could have been a penalty. You could see the crowd up with that uproar, but sadly it wasn't a fair challenge. पर देखिए, सिर्फ एक गोल का ही फासला है, ये कभी भी इक्वलाइज किया जा सकता है। अभी अटैक पे भी जा चुके हैं, पास भी गया है, Oh my God! पर शॉट लेने के टाइम में वो वैन डाइक का एक पैर पे पैर लगना, पूरा पावर उधर ही ड्रेन आउट हो गया, एंड उसी के साथ उतना पावर नहीं था शॉट पे, नहीं तो उधर से मेसी नहीं कर सकता है। गोल वो मारेंगे, लेकिन इस बार अच्छा बहुत ही अच्छा शुरुआत इस हाफ का। सी बट देखिए, वैन डे सार आगे जाते देन ये शॉट ठीक था, बट वैन डे सार पीछे ही थे, तो इससे तो गोल नहीं आने वाला था। Yeah, but this is the right attempt that was made. It was green timed also, and he did everything right. He went for the far corner, and it was just Van der Sar saving it, to be honest. And had Van der Sar been a little over the line, because he was there on the backside, so did not really challenge Van der Sar there. But regardless, I think they've kind of read my thoughts. They realized that getting inside the box काम नहीं बन रहा. जब काम नहीं बन रहा तो दूसरे विकल्प आजमाएं, एंड उससे शायद क्या पता वो ओपनर मिल जाए, क्योंकि yesterday also, if you remember, Mumbai City FC, the goals they scored against Bengaluru FC were phenomenal, right? Everything was so well orchestrated, something out of ordinary, and that is how you can break through the thick fat armor that they're wearing at this point. Again, a chance trying to be made over here. So one thing that ATKMB still are keeping possession, but when it comes to that final line of defense, that's where Bengaluru FC get away with it. या पार्ट देखिए, मुश्किलें बनेंगे और फिनिश शायद हो सकता है, लेकिन वाटर डिफेंडिंग पोजीशन से नहीं हटे अपने, लाजवाब एंड वो अफनान थे वैन डाइक मोस्टली, एंड इधर देखिए पास खिला गया है, लाजवाब पोजीशन पे बीच में जगह बनता हुआ टुवर्ड्स हकीमी। रोडुलीत लेफ्ट हैंड साइड पे थी और हर्नांडेज भी चढ़ चुके हैं, लेकिन नहीं, उनके पास बॉल देने के लिए पोजीशन नहीं बन पाया, बॉल छीना गया। इस बार एम्बापे की कोशिश, एम्बापे टू रोनाल्डिनियो, एंड मे बी बेंगलुरु एफसी एक बहुत अच्छे पोजीशन पे बॉल उनको मिल चुका है, इधर से कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्लोज कर चुके हैं बॉक्स के पास, एक बैक पास एंड काम खत्म, उसी के साथ काम खत्म। 2-0 बेंगलुरु एफसी। जब वो आगे निकल चुके थे और कोई भी चेज नहीं कर रहा था, तब पता लग रहा था कि रोनाल्डिनियो वो सिर्फ गोल नहीं करते, उनका पासिंग भी बहुत अच्छा है, तो वो पास दिए और रोनाल्डो गोल के सामने, कोई गोल के सामने नहीं है, खाली गोल तो नहीं करने वाले। Yeah, the moment Theo Hernandez just charged in for a tackle and he lost the ball,
and Ronaldinho went in, I could Yeah, smell that goal. And I think you could see that composure also being exercised by the players of Bengaluru FC. All they had to do was, they in fact stopped sprinting. You know, ideally, most of the amateur players, what they do is they just keep on sprinting. Oh, mauka mila hai, chalo chalo, bhago bhago. But no, that was not the case. They were calm, they were poised, and they went in. That found until the very end, he did not let loose of the pass. Last moment, he passes it on, and it was checkmate there, done and dusted. And yeah, with that second goal coming in, I think slowly but surely ATK Mohun Bagan are being poisoned to a loss over here by Bengaluru FC. They have been giving everything. You know, you could see it's not like ATKMB are just letting Bengaluru FC get away with a win. They are yeah. trying, and you can feel it. You can feel that tension between the players. They're doing whatever it takes, but you have to take those risky plays in moments like that, and that sort of opens you up to an attack. And another one in the making with Ruud Oh, Gullit takes the shot, but Virgil van Dijk instantly deflects it away. But still, Ruud Gullit has the control, but it would take another Gullit from ATKMB to take the ball position away. यस, देखिए पूरा ट्राई तो किया जा रहा है फॉर श्योर, लाइक उस पर कोई दोहराई नहीं है। वो जिस तरीके से ट्राई कर रहे हैं बहुत ही लाजवाब। बट इस बार होगा एक टैकल जिसकी वजह से मिलेगा एक फ्री किक, बट फ़ायदा नहीं हुआ। बॉल इधर खो बैठे, डायरेक्टली एम्बापे को दे दिए। कोशिश था हुलीद को देने की, बट वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। बट हकीमी बॉल अभी भी है उनके पास, कंट्रोल में भी आएंगे। रोनाल्डो इधर मौजूद, बट नहीं, हेवी टच, सॉफ्ट टच करके बॉल रखना ज़रूरी था, बट एक हेवी टच करके बॉल आउट ऑफ कंट्रोल गया। अभी के लिए बेंगलुरु एफसी उनके तीसरे गोल के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से निकल चुके हर्नांडेज टुवर्ड्स यूसेबियो। वो कभी कभार स्ट्राइकर पोजीशन पे खेलते हैं, कभी कभार राइट पे खेलते हैं, तो बहुत ही वर्सेटाइल एक प्लेयर है। आप कहीं पे भी खिला लो, वो अपना काम ज़रूर करके जाते हैं, एंड पेस भी है बहुत ज़्यादा। तो एक प्रॉपर कार्ड जिसको आप एज अ सुपर साब यूज़ करना चाहो, वो है यूसेबियो। सो या, नो डाउट ऑन दैट। यूसेबियो का जो न्यू कार्ड है गुड बर्थडे, वो आते ही सब लोग यूज़ करना क्यों चालू कर दिए हैं। लेकिन क्या एक और गोल आएगा बेंगलुरु एफसी की तरफ से? सब रेडी, यूसेबियो रेडी, शॉट लिए, लेकिन नहीं, डिफ्लेक्शन। अच्छे You know, कोशिश। yeah, one of the reasons why I think we're seeing a lot of Eusebio come up is because of that five-star skill moves and five-star weak foot, and being played as that center forward position. You can also pair that up with Ginola, and there you go. That is game, set, and match. Bengaluru FC, the third goal comes in, and ATK Mohun Bagan feel the jolt of a defeat haunting them, burning their face, and they have nothing more to say. You could see on Vicky's face that loss is evident, and TT, now things have opened up in it, because now Hyderabad FC and Kerala Blasters FC would have that sly smile. Chalo, एक और then एक और मौका, and what better way to face off against each other to decide who qualifies. That's a perfect ending, I must say, for that sixth spot. यस, एंड उसके लिए चेन्नई को भी इधर अपना जो नेक्स्ट मैचेस है वो जीतना होगा, क्योंकि चेन्नई भी इन द कॉर्नर थोड़ा बहुत टेंशन में ज़रूर है। वो सोच रहे हैं ये लोग तो अपने अपने बीच में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या, तो उनको भी उधर जीतना होगा। तो इसी के साथ कहने की हमारा ये मैचअप का रिजल्ट जो है वो तो डिसाइड हो चुका है, बट एक और तीसरा गेम रहेगा जिसपे एक दूसरे के आमने सामने आएंगे सागनिक एंड अफनान। सागनिक के लिए बहुत कुछ है आज प्रूव करने को, क्योंकि सागनिक को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन किए हैं, और सागनिक उतना खास कहने के जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं पिछले कुछ गेम्स पे, तो उनके लिए बहुत कुछ है। आज वो जितना भी जीते, मुझे लग नहीं रहा कि वो आज उतना मतलब चिल करके खेलेंगे। आज उनको जीतना होगा और वो जीतने के लिए आएंगे। Yeah, I think this is again one of those moments for Shagnik where he's kind of he has options that he can chill and play. But like you said, yeah, I kind of feel that
this is going to be one of those games where he needs to get his confidence back. But in the co-op, again, a very clinical performance by CJ and Shagnik both, ensuring a 3-0 victory against ATKMB, clinching those 3 points, and getting ever so close, right? They had been messing a few points here and there. Now will be tied with Mumbai City FC. But Mumbai City FC have now played one less game, so they still have chances to win their next fixture and go to 20 points. And this is where you could see ATKMB, at least till that 75th minute, they felt like they were try-harding so much. They were sweating it out. They literally got in every inch of their cells trying to win this game. But when you face the behemoths that these two players are, CJ and Shagnik, sometimes gets too much you, because then those goals that came up for them for Bengaluru FC, you could see, right, the composure was there, right decision making, good proper defense. The defense was so good that ATKMB barely could take any shots. They were now opting for taking those finesse, for those trivelas. They were trying to do that, and ATKMB literally सब कुछ टेबल पे रख दिया और कुछ छोड़ा ही नहीं था वहाँ पे. बट फिर भी उतना काफी नहीं रहा, एंड इसके वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा. तो एक बारी नजर डाल देते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ. So it's a 3-0 victory for Bengaluru FC. The 5-1 also sort of ensuring that Bengaluru FC, the 3 points right in their pockets as we head into the final matchup, where Afnan will be quite displeased with how the co-op game went for him, even despite trying so hard, failing there. Now against Shagnik, he would want to prove a point that he still possesses a threat for Hyderabad FC and Kerala Blasters FC in the upcoming fixtures. Yeah. And अभी देखिए फाइनली जो यानी कि डिस्कशन हम लोग कर रहे थे इसके पहले, ये शाग्निक वर्सेस अफनान, एकदम स्टार्टिंग पे ये कोऑप गेम कहने के हम लोगों को पता था कि डिसाइड होने वाला है, लेकिन इस कोऑप गेम के ऊपर ATKMB ने सब कुछ दिखाया. तो उनके एफर्ट्स को लेके तो हम लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन या उनका एफर्ट्स एकदम प्रॉपर था. बट ऑन द अदर हैंड इधर बेंगलुरु एफसी वो कुछ बेहतरीन प्लेस दिखाए, जिधर से उनका इंडिविजुअल गेम बहुत अच्छा था. इंडिविजुअली अगर देखा जाए उनका बहुत ही अच्छा सिनर्जी तो था ही, लेकिन जब वो एकदम अटैकिंग थर्ड पे पहुंच रहे थे, वो कुछ अलग कर रहे थे. सिर्फ पासिंग के अलावा वो पास नहीं कर रहे थे. वो जैसे कि एक शॉट जो गोल नहीं हुआ था रुड हलीद के साथ, लेफ्ट गए उसी टाइम पे राइट लेके गए, जो सब लोग सोचे थे शायद उधर पास देंगे, लेकिन वो राइट कट आउट किया एंड उसके बाद शॉट लिए. हो सकता है कि वो गोल नहीं हुआ, लेकिन उससे पता चलता है कि यस कुछ अलग कर रहे हैं. तो यही चीज जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा था बेंगलुरु एफसी के पास. बट या फाइनल गेम, एंड आई थिंक ये गेम भी बहुत ही ज्यादा पावर पैक्ड होगा. एक तरफ अफनान जो अपने एकदम ग्लोरियस फॉर्म में चल रहे हैं, ऑन द अदर हैंड वो एग्रेसिव शाग्निक जो अपने जीत के लिए खेलेंगे. हालांकि वो ओवरऑल तो जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे कि ये मैचअप उनके हाथ पे आए. Guess what's going to happen? Edison Morris goes out. Thank you so much for your chem points. Thank you, said by De Bruyne from R9, Ronaldinho. Thank you so much. You did very well, and now leave the rest to us. As Van der Sar will come in, and I think this final showdown. Well, let's see Afnan what he's got to show, and for Shagnik also. One other thing for the Bengaluru FC fans, they will be elated tonight because yes, their losing streak of those 2 games finally comes to an end, and now a little bit of a reassurance for the supporters, for their fans, that hey, we were barely playing at our 40-50% potential, and today when we showed that 70-80, you could see those thunderstorms in the air. But this time again Shagnik was a threat, but Afnan, he's a tough cookie. He's very hard to break. Yes. Bellingham towards Ronaldo, Khalid, and Afnan finally attack पे जा चुके हैं with Theo Hernandez. Oh, कोशिश था डायरेक्ट शॉट की, लेकिन वो एक डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से उतना पावर नहीं मिला और इधर बॉल गोल पे भी नहीं रहा. लेकिन यस, अफनान वो बिल्कुल कोशिश करने वाले हैं.
उनको देखिए उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके पहले क्या हो गया, क्या नहीं। वो अपना गेम आते हैं जीतने के लिए। तो वो जीतने की कोशिश कर रही है अभी भी। बट ऑन द अदर हैंड साग्निक एज़ वेल। साग्निक शॉट लिए, अभी भी मौका है यूसीबी उनके पास मौजूद। और देखिए इधर कोशिश था अच्छा, बट डिफेंडिंग लाजवाब फ्रॉम द साइड ऑफ अपना। सो ये गेम जैसे कि हम लोग सोचे थे कि या बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, एंड टू एंड होगा, एंड वही होता हुआ दिख रहा है। Yeah, at this point, where do we go with this? Because Afnan, he's also been looking quite aggro with Mbappe and almost gotten that ball over there. But Shagnik, he needs to redeem himself tonight. And what better way with a beautiful pass towards Mbappe, that ball roll. Oh my goodness, Shagnik just stop it as he's managed to play with Afnan's heart and crushed it and burnt it alive. Oh God, that goal was brutal. Bengaluru FC, such an early lead, and Shagnik has no intention of scoring. He is on the path to reclaim his former glory, to say it out loud. Do not take me for granted anymore. Because if I get in the mood, if I get in the groove, then this is what I can do. यस, एंड आई थिंक जब सीजन चालू हुआ था उस टाइम पे हम लोग 4 क्लब्स को लेके बहुत बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, बेंगलुरु एफसी, मौका बन रहा है। बट या लाइक यू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, बेंगलुरु एफसी, हैदराबाद एफसी एंड उसी के साथ-साथ एफसी गोवा। ये चारों के चारों क्लब्स को लेके इसीलिए बात हो रहा था क्योंकि हम लोग को देख के लग रहा था स्टार्टिंग में कि यस दोनों ही प्लेयर्स एकदम ऑन पॉइंट एंड एकदम लाजवाब लेवल पे खेल रहे हैं, दोनों ही अलग फॉर्म में है। बीच में हम लोग बेंगलुरु एफसी थोड़ा-सा पीछे इसीलिए रखे क्योंकि शाग्निक का जो फॉर्म है वो डाउन हुआ, एंड हैदराबाद एफसी का भी। दैट्स व्हाई अभी सिर्फ 2 ही क्लब्स के नाम ले रहे हैं। लेकिन शाग्निक अगर फॉर्म में आ जाते हैं देन वो 3 लाइक 2 क्लब्स के साथ इनका भी नाम जोड़ा जाएगा क्योंकि शाग्निक भी कुछ उसी कैलिबर के प्लेयर है, सिर्फ उनका फॉर्म नहीं चल रहा था पिछले कुछ मैचेस से। बट फाइनली आज जिस तरीके से उन्होंने पहला गोल किया है देख के लग रहा है कि वो शाग्निक, पुराना शाग्निक जिनको सब लाइक जिनको देख के सब लोग डरते थे, वो फाइनली इधर वापस आता हुआ दिख रहा है। 28 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। बॉल कंट्रोल लाजवाब विद डी ब्रुयना रखे थे, पर देखिए अभी तक अगर देखा जाए तो अफनान ने कोशिश बहुत किया है, बट कुछ वैसा थ्रेटनिंग अटैक अभी तक नहीं है। Yeah, I think Afnan at this point should understand that Shagnik has just managed to score 1 goal, and we know in the world of FIFA that 1 goal means nothing, to be honest. But if Shagnik scores 1 more at the end of the first half, then this is where you could see Afnan sort of sweating it out. He has to keep his cool, and this time with Jairzinho making a run, Wow. nice pass onto it, Oh. Mbappe. And had there been R9 over there, I'm pretty sure I guess Afnan would have just instantly gone for a shot. And we've seen goals like that being scored yesterday on multiple occasions. But now Shagnik, all these passes that he's finding, those through passes, Wow. and then with Ronaldinho has so much room Wow. and goes for an extra one. But one pass too many chefs spoil the broth. And that seems to be the case over here. Shagnik, a little bit of an overthinking done in that process. Trying to create a much safer or secured goal, and he bottled the chance. या रोनाल्डिनियो के पास प्रॉपर मौका था, जगह था, प्लेस था, रूम था, सब था, लेकिन वो शॉट नहीं आया और जिसकी वजह से गोल नहीं हुआ। 39 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है बोर्ड के ऊपर, एंड अभी सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट के ही गेम है फर्स्ट हाफ में। बट जाते जाते अगर अफनान इधर से एक गोल स्कोर कर दे देन प्रेशर हट तो जाएगा ही, ऊपर से और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे अफनान। जार्जिनियो, ओह रोनाल्डिनियो के पास बॉल, मौका एक बार फिर से मिला है, बॉल इधर खो चुके हैं, काउंटर पे जाएंगे बहुत जल्दी। राइट हैंड साइड से रन निकाल चुके हैं देखिए ऑलरेडी थियो हर्नांडेज एंड सॉरी हकीमी। क्या हकीमी को बॉल देंगे? रोनाल्डिनियो बॉल कंट्रोल प्रॉपरली रखते हुए अपने पास, कोई गलती नहीं, बट ओ इस बार गलती हुआ अफनान से। अफनान, क्या ये गलती का खामियाजा भुगतना होगा? नहीं, मार्टिनी आए एंड जो गलती हुआ था उसको रेक्टिफाई। And at this point, with the way this matchup is going,
kind of slightly favors Shagnik, but look at Afnan's possession stats, 57% already. He's been desperately trying, initially was a little playing from the box to box, then started utilizing his wings. He's been putting all that he can to this game. But at the back of his mind, he also knows, right? What is he fighting for when he's already lost the war? What good could a battle do to him? So at this point, Afnan, had things been otherwise, had they secured something, even if that co-op would have been in a draw, then Afnan could have at least fought for that 1 point. And we know how much even a single point for ATK Mohun Bagan means at this junction that we are in right now. So at this point, Afnan, come at the second half, he will try to get a goal back. But the big question is how? Yeah. How? यही तो क्वेश्चन है अभी के लिए, लेकिन उसका आंसर कब मिलेगा? जल्दी लेके आना होगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। बट देखिए, कॉर्नर से अटैक बन रहा था, बट बॉल छीना गया। रोनाल्डो, इंडिविजुअल जो स्किल्स है, जो ड्रिबलिंग है, वो काफ़ी अच्छा है सागनिक, एंड वो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। वो इंडिविजुअली जो मूव्स करते हैं अटैकिंग थर्ड पे जाके, लाइक जो स्किल मूव्स देखने के लिए मिलता है। देखिए एक बार फिर से पहुंच चुके हैं, कोशिश था दूर लेके जाए, हम देखिए जब भी गोलकीपर आगे आता है, डिफेंडर सामने रहता है, तब हो जाता है। I took it with Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. याद है आपको? Yes. I think we were in the same VC, right? Yeah. I think it was against Croatia, I guess, that match. No, Argentina. It was against Argentina. Oh yeah. The fight that broke out. Yes, and Virgil van Dijk took the pen, he missed, and he keeps the customs on. And now, all right. It's all right. I mean, Shagnik has been denied a chance, but you could see at this point that Shagnik is trying to make a statement here. Yeah. But on the other hand, Afnan, शॉट इधर नहीं पहुंच पाया, बीच में इंटरसेप्शन आया, लाइक एक हुलित से शॉट था, दूसरा हुलित उधर डिफ्लेक्ट किया, तो हुलित थिंग्स। बट एज ऑफ नाउ अभी भी मौका है विथ रोडलीत, और रोडलीत को ही इधर किया चैलेंज, एंड काफ़ी अच्छा कहने के गेम दिखाते हुए सागनिक का डिफेंसिव अप्रोच बहुत अच्छा है, और अफनान का भी जो अटैकिंग अप्रोच है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि विथ हुलित आप जानते हैं कि स्टेप ओवर करके आप बीच से निकल सकते हो डिफेंडर्स के, क्योंकि फिजिक इतना अच्छा है, तो वही कोशिश था। बट उसी जगह पे हुलित को लेके आना सागनिक का बहुत अच्छा डिसीजन था। बहुत बेहतरीन गेम अभी तक चलता हुआ दोनों ही साइड से, 1-0 का स्कोर लाइन, ऐसा भी नहीं है कि कोई एकदम दूसरे के ऊपर चढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा एवी-7 गेम चलता हुआ बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन जो वो गोल स्कोर हुआ था उससे आगे है, बट ऑफ साइड इस बार फंसेंगे, लेकिन अफनान ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, विसल बजा आए और स्टार्ट। Yeah, and I think at this point, well, at a certain point, you would see Afnan trying to get a little bit more attacking. Will just go all out, and that could be that final hit that he would want to go for. But this is a good chance in the making. The pass given too early, and no, नहीं, ये मैच सच में बहुत अच्छा चल रहा था, वो चाहे कुछ रिजल्ट बचे ना बचे। आई थिंक बाकी मैचेस, बहुत सारे मैचेस ऐसे चले हैं जिसपे हम लोग देखे हैं कि ऐसे होता है, बट ये मैच सच में बहुत क्लोज, एक ही गोल था, 2 गोल भी नहीं, 1 गोल, और कहीं पे भी आके ये इक्वलाइज भी हो सकता था, और शायद इधर अफनान जीत भी सकते थे, क्योंकि ऐसा हुआ है इसके पहले। बहुत there's one of my friends working on the backlines. He was very happy, and I'll name him Jalaj. He was very happy that fixes today, everything is going okay, no crashes, nothing whatsoever. I was like, bro, don't curse it, and it has come true.
quite disheartening to me, for me at least. I wanted to see the conclusion of this game, and I'm pretty sure all of you viewers, and especially all Afnan's fans, because he's been collecting a lot of fandom lately. The way he's been playing, the hero of ATKMB, and certainly he was closing in. He was closing in. I was feeling that goal, but to my utter disappointment, and for everybody else's. And this is something that we have said even before. That's beyond our control. We have been in constant touch with the developers. We've been trying to get a fix, and so far it was running smoothly. At least today there was no crashes, but suddenly we see one Yeah. more, and it kind of breaks my heart. But yeah, I think at least for you viewers, there's going to be no change in the storyline, CT, because no matter whatever the outcome of this game would have been, it was still those 3 points secured for Bengaluru FC. And at this point, I think we've got enough time now to do the maths, because I've got the standings in front of me, and this is where I get to see that Hyderabad FC now they have, I guess, one more game to go, and they have done pretty well tonight. But well, where do they go from here? Where do they go? What can they achieve? Because at this point, Kerala Blasters FC also would be eyeing out, would be just thinking that where do we go? What do we do? Because for them also, it's a must-win game. Must-win game. There's no chance that they can sort of mess this one up, right? So considering that Hyderabad FC have won tonight, so they are sitting at 11th with 11 points at I guess 5th position, and then you've got ATK Mohun Bagan at the 7th now, and ATK Mohun Bagan have lost a game, and still they have a game on their hands. So if they win their next matchup, they're gonna get tied with Hyderabad FC and Chennai FC also. So now Chennai FC suddenly is also into the equation. They're also not safe, huh? But for Kerala Blasters FC, though, it's like literally a must-win game. And they just have to hope that the other clubs, at least ATK Mohun Bagan has lost for now. They have to go on to defeat ATK Mohun Bagan and the next fixture also. So, TT, क्या लगता है कौन होगी वो छठी टीम जो हमको देखने को मिलेंगे हमारे प्लेऑफ्स में, जो कि होगा एक लैन? या आई थिंक ये तो बहुत टफ है, बट या कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आई थिंक एटीकेएमबी के पास एक बहुत ग्लोरियस चांस था कि इस मैच को जीत के वो जो गैप है वो बना ले, लेकिन एक प्रॉपर पोजीशन बना ले, लेकिन वो हुआ नहीं। इस बार हैदराबाद एफसी कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे जाते हुए देखे। सो 7th पोजीशन पे ऑलरेडी एटीके मोहन बगान है, तो इस बार केरला ब्लास्टर्स एफसी को कहीं ना कहीं ये चीज तो क्लियर हो चुका होगा, ये सिर्फ ड्रॉ से काम तो होगा नहीं। वैसे वो दोनों जीतने होंगे, दोनों अगर जीत भी गए फिर भी उनको ये कहीं ना कहीं जरूर सोचना होगा, एंड उनको उनके हाथ में नहीं है काइंड ऑफ पहली बात तो, कि हैदराबाद एफसी एंड चेन्नई एफसी इन दोनों में से किसी का भी एक कुछ ना कुछ एटलीस्ट जो है वो प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि सिर्फ एटीके मोहन बगान के साथ होने से नहीं होगा, क्योंकि एटीके मोहन बगान ऑलरेडी 7th पे आ चुके हैं, तो एटीके मोहन बगान तो भी बाहर है। अभी चेन्नई एनएफसी एंड हैदराबाद एफसी में से चल रहा है पूरा सिनेरियो। चेन्नई एनएफसी प्रॉब्लम में है, चेन्नई एनएफसी का फॉर्म भी बहुत ही ज्यादा डगमगाहट के साथ चल रहा है। कमेंटी का काफी अच्छा खेलने के बावजूद मुझे लगता है कि नवीन को फॉर्म में वापस आना होगा, नहीं तो मुश्किल होगा। उस जगह पे जाके 11 पॉइंट्स इधर से अगर मैचेस नहीं निकाल पाए, जो कि मुझे लगता है कि निकाल लेंगे क्योंकि फिक्चर्स उतना भी ज्यादा टफ नहीं है चेन्नई एनएफसी के लिए, तो बहुत सारे कैलकुलेशंस है। आई थिंक आखिरी के कुछ दिनों पे हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, बट आई थिंक वो टाइम आ चुका है जब हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ था पिछले मैच में। जी हाँ, एक बार नजर डाल देते स्कोर कार्ड के लिए, क्योंकि मुझे और भी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चल रही है यहाँ पे। सो इट वाज जस्ट दैट one goal separating Afnan and Shagnik, a very close affair which ended with Shagnik's victory, so a whitewash for Bengaluru FC. But now let's get to that interesting bit. So we were talking about Chennai FC getting into the equation. Now this is where things are so going wrong over here, because now
there is a matchup where ATK Mohun Bagan go on to face Hyderabad FC, right? Somebody has to win that fixture. Somebody for sure has to win that fixture, or even if it ends in a draw. Because at the very max, Kerala Blasters FC can get 12 points. But if ATK Mohun Bagan go on to win their next game and get a draw in the game after that, then they will end at 30, still 1 point ahead. But now let's take a look at the MVP. Yeah, of course, it is CJ. Congratulations. We finally saw that menacing CJ back in action, and it was a very nice victory for Bengaluru FC. But then when you have Chennai FC back into the equation, so Chennai FC have a fixture against Jamshedpur FC, which ideally they will want to win that one, and that is Jamshedpur FC is one of the final games where they'd also stand a very slight chance, to be honest. Like they barely can get in, and I don't see their chances really good there. So one thing there, let's just say that they win. If they win that matchup, then it's done and dusted, because Chennai FC are anyways on 11th position, and then the fight will be for that final spot. So for Kerala Blasters FC to really make it, they will have to defeat Chennai FC and also hope at the same time that Jamshedpur FC beats Chennai FC. And so many things are going on. And let's take a look at the leaderboard to give you much more clarity on that. Because now look at that. Hyderabad FC is at the 5th spot. Chennai FC have dropped down to 6th. Now Hyderabad has played their 9 games. So if they defeat ATK Mohun Bagan in their next matchup, then they would be ending at 14, which will pretty much secure their spot. But for ATK Mohun Bagan, they have 2 matches, and 2 matches in which they have to get a win and a draw at the bare minimum to just close in. And that too provided Chennai FC lose all their games. And Kerala Blasters FC also. Yes. And I think ATK Mohun Bagan इधर अगर हैदराबाद एफसी को हरा देते हैं, तब हैदराबाद एफसी के लिए भी सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं. तो इधर देखिए मुश्किलें तो है हैदराबाद एफसी के लिए. आखिरी मैच है जो कि उनको जीतना ही जीतना है. शुरू किए थे जेनेसिड एंड वॉरसी एक ऐसे लेवल पे जिधर लग रहा था कि ये तो रहेंगे ही टॉप 4 में, बट एंड करेंगे क्या वो टॉप 6 में रहेंगे, ये क्वेश्चन के साथ. देन कहने की ये जो कैलकुलेशन है, इसको तो अभी बहुत दिन बाकी, लाइक बहुत दिन नहीं बट कुछ दिन बाकी है जिसपे हर दिन ये कैलकुलेशंस चलते रहेंगे. तो या बहुत बहुत कुछ हो सकता है इधर. आप सब लोग एक नोटपैड लेके बैठिए, क्योंकि हर एक मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी अ नेल बाइटर फिनिश टू द लीग स्टेज. बट इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा जो कार्यक्रम है होता है यहीं पे समाप्त. हम आपसे लेंगे अलविदा. मिलेंगे फिर से कल आपको इसी समय इसी दौरान और 3 मैचेस के साथ. तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड हैव गुड नाइट.